Assalamualaikum. Today we will discuss about genitourinary tract tuberculosis, about epidemiology, etiology, renal tuberculosis, ureteric tuberculosis, and bladder tuberculosis. Tuberculosis can affect any organ system of body, including genitourinary tract. Untreated genitourinary tract TB can lead to irreversible tissue damage with serious consequences such as renal failure and infertility, making it critical for clinicians to consider TB in the differential diagnosis of genitourinary disorders. Epidemiology. Genitourinary tract TB, which account for 20 to 40% of extrapulmonary tuberculosis, second most common site in developing nation after lymph node tuberculosis, and genitourinary TB is third most common site in developed nations. Genitourinary TB affect kidney in 80% of the cases, mostly hematogenous spread, and then epididymitis, testes, bladder, ureter, and prostate may be affected. Etiology. TB is caused by the group of closely related acidifast bacteria referred to as Mycobacterium tuberculosis complex. This complex includes species can cause disease in humans are Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium africans. By far the most frequent isolated species in the human TB worldwide is Mycobacterium tuberculosis. Local geographical differences also exist. For example, Mycobacterium africanum cause 40% TB in West Africa. Transmission is through aerosol when Mycobacterium tuberculosis bacteria reach in the lungs at the level of alveoli, from which at alveolar level bacteria is engulfed by alveolar macrophages. At this level, alveolar macrophages try to kill the bacteria. If escape from killing at this level, then innate immunity activate by the release of cytokines interleukin 6, interleukin 10, which activate other neutrophil dendritic cell other macrophages, which try to kill the infected macrophages. At this level, if escape the acid fast bacilli, then adaptive immune system activate. When adaptive immune system activate, T cell activation occurred, which release interferon gamma. Interferon gamma maintain the granuloma and try to kill the infected macrophages and acid fast bacilli. At this level, if bacteria don't kill by this process, but granuloma is maintained and replication of acid fast bacilli is stopped. This phase is latent phase, and 90 to 95% patient at this level considered control disease, and about 5% patient in which adaptive immune response system failed and disease progressed primarily and disseminated disease. Latent infection may reactivate later in age due to immunocompromised condition. Clinical manifestations and pathological features, symptoms and signs of genitourinary tuberculosis are often non-specific. Patients are often treated for other bacterial infections, sometimes repeatedly are evaluated for possible malignancy before genitourinary tuberculosis is entertained. Symptoms correlate with severity and location of disease. The typical TB constitutional symptoms of fever, weight loss, night sweats, and malaise are present in fewer than 20% of the patients. Mostly present with more than 50% present with dysuria, storage symptoms, more than 33% with hematuria and flag pain, and more than 10 with renal colic. Typical laboratory findings include sterile pyuria or hematuria. The combination is found in more than 90% of genitourinary tract patients in developing countries.
80% of genitourinary TB occur in kidneys. It is progressive and highly destructive over time. The pathological findings in kidney vary greatly depending upon the disease severity. Miliary TB is a disseminated disease involving the multiple organ system. It has high mortality rate in the kidney. The mila can found in studying the renal cortex and medulla and do not usually affect the renal functions. In more localized infection of the kidney, the tubercle bacilli become lodged first in the periglomerular capillaries, where granuloma formation in the renal cortex, where it caseate and cavitation and necrotic material formation, which results frank abscesses, chronic pyelonephritis, parenchymal papillary necrosis, and sinus tracts formation occur. Sinus tracts may emerge along the flanks. Examination findings at this stage can include costovertebral angle tenderness. Infection advances, calyces become inflamed and eventually calcify, resulting in calcial distortion, dilatation, and stenosis. With enough disease progression, the kidneys become non-functional by a process called autonephrectomy. It is present up to 33% of the patient of genitourinary tract tuberculosis. Two types of autonephrectomy: caseocavernous type, in which viable tissue is replaced with granulomas and cavities filled with inflammatory exudate, with or without calcification. Fibrotic type, in which severe scarring and calcification resulting in a shrunken kidney. End-stage renal failure develops in about 7% of the cases. Chronic inflammation may lead to squamous metaplasia in the renal pelvis that persists after treatment, posing a risk for squamous cell carcinoma. Diagnosis of genitourinary TB by culture, nucleic acid amplification, histopathology, screening test, and imaging. Gold standard of diagnosis of genitourinary tuberculosis is urine acid-fast bacilli culture. First void urine sample is best because urine more concentrated at that time. 3 to 5 urine samples on consecutive days should be collected for maximum yield. Sensitivity is 80 to 90%. Just hold on, Dr. Fayaz. Can any resident give the reason why it is important to have 3 to 5 samples? Why not just one specimen? Dr. Umair, any reason why we need to have 3 to 5 or multiple urine specimens? So to rule out any false positive result. False positive, false negative. Okay, any other good reason, Dr. Arslan? It's because the excretion of Mycobacterium tuberculosis in the urine is not continuous. It's episodic. Dr. Sunil, thank you, Dr. Sunil, for coming here. We would like to have your input in this regard as well. So why we need 3 to 5 or multiple urine samples to diagnose it? सबसे पहले ना जो मैंने कहा in tuberculosis culture में ना we cannot have a false positive result actually. Whenever the culture is positive, it's positive actually. तो वो जो 3 कराते हैं, that's the reason is not कि हम false positive शायद probably smear की positivity we may have a mort in the urine, mycobacterium other than tuberculosis, but in culture it's actually a tuberculosis even one sample is positive. Or getting a 3 sample, the reason is what Usman told ke because it's not a like a bacterial disease के बहुत high count होता है. The count is hardly 10 mycobacterium tuberculosis bacilli होते हैं, 20 होते हैं, तो उनकी excretion uniform नहीं होती. अच्छा, ये सेंसिटिविटी इन्होंने तो 60 to 70% लिख दी, लेकिन हमारे अपने इंस्टीट्यूट में जो हमारा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि इज हार्डली 20%, क्योंकि हमारे पास यूरिन कल्चर की भी इतनी अच्छी यील्ड नहीं है एक्चुअली. ये किसी सेट कंट्रोल सेटिंग में हुआ होगा तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास यील्ड तो बहुत ही पुअर है. हमारी जो डायग्नोसिस है वो वैसे कल्चर बेस्ड बहुत ही कम होती है.
अर्ली मॉर्निंग सैंपल ही जरूरी है या? हाँ, अर्ली मॉर्निंग सैंपल में एक्चुअली क्या होता है कि जब बंदा लाइट हुआ हुआ होता है तो उस वक्त यूरिन कंसंट्रेट कर रहा होता है, तो यूरिन जब कंसंट्रेट होकर जब वो पहला वॉइडिंग सैंपल देते हैं हम लोग, तो उसमें चांसेस पिक करने के हाई होते हैं। अच्छा, पहला वॉइडिंग, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हम यूरिन बैक्टीरियल कल्चर कहते हैं कि आप पहला पार्ट डिस्कार्ड कर दिया करें, इसमें पहला पार्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो कंसंट्रेटेड किडनी से चांसेस होते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल कंटामिनेशन तो हम देखेंगे नहीं, हम ऐसे मेथड से लगाएंगे कि बैक्टीरिया तो उसमें ग्रो ही नहीं करेगा। तो वी डोंट हैव कि हमें मिड स्ट्रीम यूरिन चाहिए, हमें इसमें पूरा यूरिन का पहला सैंपल अर्ली मॉर्निंग का लेबोरेटरी को भेज देना चाहिए। और कोई इसमें ये भी नहीं है कि भले घर से लेके आ जाए, बेटर इज टू गिव अ बॉटल, भाई घर से लेके आ जाओ, क्योंकि यहाँ आके करेगा जब बीच में उसने चांसेस है, क्योंकि हमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन का कोई खतरा नहीं है। लैब में जिस मेथड से लगाया जाएगा उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन होगी नहीं, क्योंकि वो बैक्टीरिया को किल करके ही माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस देखा जाता है। तो मिड-स्ट्रीम यूरिन बैक्टीरियल कल्चर तो शायद वो कहेंगे भाई यहाँ आके दो, ताकि वो जो घर से 2 घंटे या 2.5 घंटे का भी सफर है वो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाएगी। लेकिन इसमें जो है ना वो घर से भी लाके सैंपल दे सकता है, और इसमें हम कैथेटर के बैग से भी कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कैथेटराइज है, हमने रात का सैंपल जमा हुआ है, रात को खाली कर दिया, सुबह वो आ गया, तो हम उस कैथेटर के बैग से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन का खतरा नहीं है। थैंक यू सर। Screening. Sir, my question, Dr. Sunil. Sir, what is the sensitivity and specificity for the urine for to diagnose the renal TB? And what is the gold standard test to diagnose renal TB? Gold standard is culture, although very poor sensitivity, but gold standard is still urine culture, because culture is most important. Urine, basically a very non-invasive type of way of diagnosing GUTB. So urine has got its importance. आगे प्रयास आई थिंक 2 स्लाइड्स के बाद इसका आंसर हम लोग एक होल डिस्कस करेंगे। यूरिन में ना देयर आर अदर टेस्ट व्हिच एक्चुअली हैव अ बेटर यील्ड देन कल्चर, तो वो आगे 2 स्लाइड्स में डिस्कस हो जाएगा। देन वी कैन ओवरऑल डिस्कस द सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन फॉर डायग्नोसिस ऑफ GUTB। Yes, Dr. Fayaz. Other screening test in which tuberculin skin test, which is also known as Montauk's test and interferon gamma release assay. Both tests do not differentiate between latent and active tuberculosis. In Montauk's test, basically we inject sterile purified protein intradermally at volar aspect of forearm, and the positivity is divided into 3 groups by risk factors. In category first, in which in duration is less than in which in duration is 5 or more than 5 mm, which is noted at after 48 to 72 hours. In which more than 5 millimeter in this group, HIV positive, recent history, contact history with active tuberculosis, nodular or fibrotic changes on X-ray chest or organ transplant. The patient with has more than 10 mm in duration are considered positive, which has history or risk factor, recent arrival less than 5 years from high prevalence countries, IV drug users, resident employee of high risk settings, mycobacterium tuberculosis labs personnel, comorbid conditions, children less than 4 years, or infant, children, or adolescent exposed to high risk categories, and the patient which has more than 15 mm are considered positive which in a normal population. Go back to slides. जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट है ना, ये जो ग्रे शेड में इन्होंने लिखा हुआ है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये डिफरेंशिएट नहीं करती है बिटवीन लेटेंट टीबी एंड एक्टिव टीबी। जगह फयाज ने जो बहुत अच्छी जो नेचुरल लाइफ साइकिल समझाई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जब भी पेशेंट एक्सपोज होगा टीबी से, बल्कि पेशेंट ही पर्सन एक्सपोज होगा, तो बॉडी के जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं उसको कंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये सिर्फ ये है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मौजूद है या नहीं है। पहले ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट होती थी, उसको थोड़ा बेहतर तरीका करके ये इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे मौजूद है, 2 किस्म के मौजूद है। लेकिन ये सिर्फ ये बताएंगे कि मैं कभी एक्सपोज टीबी से हुआ या नहीं हुआ। विद अ वेरी, ऐसे नहीं कि बहुत अच्छी फॉल्स नेगेटिविटी भी है। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पे यूज होता है कि हम टीएसटी और इंटरफेरॉन गामा यूज करें फॉर डायग्नोसिस, लेकिन इन डेवलपिंग कंट्रीज इट हैज गॉट नो वैल्यू।
डेवलपिंग कंट्री में आप ना इससे एक्सक्लूड कर सकते हैं ना इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे टेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं कि जिसकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी अच्छी ना हो और पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी अच्छी ना हो, तो डायग्नोसिस में हमें इसका कोई रोल नहीं है। जो नेक्स्ट में जो इंटरप्रिटेशन डॉक्टर फयाज ने बताई ना 3 डिफरेंट किस्म की, दिस इज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, this is not for developing countries. In developing countries we may have people having more than 15 mm with no nothing at all, क्योंकि उसको कभी latent TB होगी, और latent TB treating in Pakistan for latent tuberculosis कहते हैं फायदा नहीं, क्योंकि पेशेंट री एक्सपोज हो रहा होगा। जैसे हम अपनी एग्जाम्पल ले लें, हम कितनी दफा एनएच खाएंगे, हम 6 महीने के लिए खाएंगे, लेकिन हम दोबारा से एक्सपोज तो पेशेंट से होता ही रहेगा। तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत कंट्रोवर्सी है कि हमें लेटेंट टीबी को ट्रीट करना चाहिए नहीं चाहिए। दिस इज ओनली फॉर लेटेंट, दिस हैज गॉट नो वैल्यू इन डायग्नोसिस ऑफ टीबी ऑफ एनी काइंड। बहुत से लोग कराते रहते हैं, फॉर हमारी जीआई टीम कराती है एब्डोमेन, सोच के भाई एब्डोमेन में लिम्फ नोड्स है वो क्या है, लेकिन कोई डायग्नोस्टिक वैल्यू नहीं है। Histopathology. When culture is negative, histopathology can helpful. Caseating granulomas and appropriate clinical contacts can help establish a diagnosis of genitourinary tuberculosis. Nucleic acid amplification test. Speed detection of TB providing result in 1 to 2 days. Add detection in patient with lower bacillary load. It has low sensitivity in genitourinary tuberculosis. Can as adjuvant not replace the TB culture for diagnosis. Then imaging. जी, अब हम इन दोनों को देखें कि हम यूरिन में कल्चर भी कर सकते हैं, यूरिन में हम नेट भी कर सकते हैं। तो इन दोनों के बाद मिलाने के बाद भी सेंसिटिविटी इज अराउंड 55% to 60%, बहुत अच्छी नहीं हुई। लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी को भी शामिल कर लें, कि जो हिस्टोपैथोलॉजी में अगर वो केजिएटिंग ग्रैनुलोमा कहता है, तो शायद प्रॉब्ली बेहतर हमारा जाएगा क्या, ठीक है ये GUTB है। इवन अगर केजिएटिंग ग्रैनुलोमा नहीं है और सिर्फ ग्रैनुलोमास भी हैं, तो ग्रैनुलोमा विद एप्रोप्रिएट सिनेरियो इन पाकिस्तान, जब हमें कोई फंगल नहीं लग रहा, हमें कुछ और ग्रैनुलोमा का कॉज नहीं लग रहा, तो प्रॉब्ली वेटेज इज टुवर्ड्स मोर दैट। एक चीज जो हमने यहाँ पे डॉक्टर सलमा ने हमारी हेल्प की थी, हमने करना शुरू किया कि आप लोग जब कल्चर्स भेजते हैं, बायोप्सीज भेजते हैं, तो ज़्यादा पता नहीं होता कि टीबी है नहीं है, तो यू सेंड इट इन फॉर्मलिन, तो वो हिस्टोपैथोलॉजी हो जाती है। अब हिस्टोपैथोलॉजी कहती है कि गेजिएटिंग ग्रैनुलोमा है। तो व्हाट डॉक्टर सलमा से हमने रिक्वेस्ट करके किया, जो फॉर्मलिन फिक्स टिश्यूज होते हैं उसका हमने जीन एक्सपर्ट करना शुरू कर दिया। तो जीन एक्सपर्ट या न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, ये पीसीआर को डिटेक्ट करता है। तो टीबी का जो जेनेटिक मटेरियल वहां मौजूद होगा तो वो पिक हो जाएगा। तो हमने कुछ केसेस में हमने देखा कि जीन एक्सपर्ट पॉजिटिविटी उन कल्चर्स में भी आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायग्नोसिस आपकी थोड़ी सी डाउटफुल होगी ग्रैनुलोमा में, शायद प्रॉब्ली बेटर हो जाए। इससे लास्ट में हमारी भी शायद लास्ट जो इसका सेशन हुआ था उसमें भी डिस्कशन हुआ, हाउ कैन वी डू बेटर, क्या में हम हर सैंपल ऑफ दीज कैन बी सेंड टू माइक्रोबायोलॉजी फॉर कल्चर्स फ्रॉम अ ओटी टेबल। तो प्रॉब्लम उसमें ये कि बहुत दफा सस्पिशन नहीं होता, खासकर किडनी बायोप्सी ऑफ किडनी, जब हम किडनी निकाल रहे होते हैं, नेफ्रेक्टमी कर रहे होते हैं, बहुत दफा हमें आइडिया नहीं होता कि यार ये टीबी हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो फयाज ने पहले बताया था कि जो सिम्टम्स हैं फीवर, वेट लॉस, शायद वो इतना अच्छा मौजूद ना हो। तो उसको शायद ब्लैडर में तो फिर भी कर सकते हैं कि ब्लैडर के बहुत सारे टिश्यूज ले रहे होते हैं, आप चलो भाई एक सैंपल आपने फॉर कल्चर दे दिया और आप सस्पिशन आपका हाई होगा, लेकिन किडनी में तो प्रॉब्ली ऐसा नहीं कर पा रहे। और डॉक्टर मुबारक से डिस्कस हुआ था उसी मीटिंग में, शायद हमारे पास जो टोटल नेफ्रेक्टमीज आती हैं उसका जो टीबी होता है वो मुश्किल से 2% है या 3%। तो इसका मतलब फिर अगर हम बहुत बड़ा चंक कल्चर के लिए जाना शुरू हो जाएगा जब हम टीबी में जाएंगे। लेकिन व्हाट वी कैन डू, यू कैन रिक्वेस्ट nucleic acid amplification test in a tissue. We can get a urine for culture, we can urine for NAT। तो प्रॉब्ली मिला मलूक के तकरीबन सेंसिटिविटी फिर आपकी बहुत अच्छी डायग्नोसिस हो जाएगी। लेकिन इन सबको हम एक साथ मतलब जब हो जाएगा इंटरप्रेट कर रहे होंगे। So, considering the non-invasive nature of these tests, like if we are not able to do biopsy or we are not doing nephrectomy, even then we want to diagnose. So, do you suggest the urine acid fast bacilli and urine for NAT is sufficient to diagnose the patient of GUTB? So, probably answer is we should try, but if these are negative, then we cannot start empirical imaging. Then we need tissue. पहला यही होता है कि जीन एक्सपर्ट
प्रोबेबिलिटी है कि हमें सीमेंट्स निकल देंगे, इसमें मैंने ना कहीं भी सीमेंट नहीं बनाया, सीमेंट की yield तो शायद 4 to 5% और उसमें भी सीमेंट डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन बॉट एंड टीबी। तो सेंडिंग इट फॉर जीन एक्सपर्ट, हमारे पास टीबी पीसीआर होता है एसआईडी, तो टीबी पीसीआर एंड अगर उससे नहीं आता एंड कल्चर आल्सो, अगर इमरजेंसी नहीं यू कैन वेट फॉर कल्चर, तो कल्चर हैज अ बेटर यील्ड देन जीन एक्सपर्ट, तो उसको लेके उसके रिजल्ट्स आएंगे एटलीस्ट 4 to 8 वीक्स बाद। तो आप अगर 8 वीक्स सबर कर सकते हैं, 8 वीक्स देख लेंगे, अगर नेगेटिव है देन यू नीड टू हैव अ टिश्यू बायोप्सी, उसमें एम्पिरिकल एटीडी स्टार्ट करना, जिगर कहीं और एविडेंस नहीं, लेकिन इफ समवन हैज गॉट यहाँ पे भी प्रॉब्लम है और साथ में लंग में इन्फिल्ट्रेट है तो फिर इजी होता है, अदर वे अराउंड नहीं कर सकते। Dr. Sunil, one query is, if a bladder is a small capacity and we have to rule out it's either a TB bladder or something else, so what do you recommend regarding we go for bladder biopsy and in which form? For example, हो सकते हैं IV in the normal saline or in the formalin sampling and something else. So Bladder biopsy में आप multiple samples ले सकते हैं, you can take samples in the formally for histology and you can put in normal line for culture. कल्चर के लिए आप नॉर्मल लाइन, बिकॉज वंस इट यू पुट इन फॉर्मलिन वो इनएक्टिव हो जाता है बैक्टीरिया सारे, क्योंकि फॉर्मलिन इज इन वो जो सारे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे, तो बिल्कुल उसके बाद नहीं कर सकते। उल्टा शायद हो सकता है कि आप फॉर्मलिन में नॉर्मल लाइन में भेज दें, फिर वहां से वो उसको 2 टिश्यू करके देन दे कैन सेंड फॉर फॉर्म हिस्टोपैथोलॉजी। वैसे ये कुछ केसेस में टीबी के सिम्टम नहीं होते हैं और वो इंसिडेंटल डायग्नोसिस होता है ऑफ टिश्यू कल्चर ऑफ ग्रेनुलोमा, so should we treat such patient or not? अच्छा देखिए, इन्होंने फयाज साहब ने पहले ही बताया था कि जो दिस इज अ फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं ना वो मुश्किल से 20% केसेस में होता है, लाइक फीवर, वेट लॉस और नाइट स्वेट्स, जो क्लासिकल टीबी के सिम्टम वो सिर्फ 20% केसेस में होता है। तो इसका मतलब 80% केसेस तो वो बिकॉज ऑफ देयर ओन प्राइमरी प्रॉब्लम वहीं से कहीं से सस्पिशन की बेसिस पे कहीं डायग्नोज हो जाए। तो ट्रीटिंग ग्रैनुलोमा इन द कॉन्टेक्स्ट यूजुअली हम लोग ये कर रहे होते हैं कि अच्छा अगर हम अगेन वो जो वो देखें लाइफ साइकिल जो दिखाई थी फयाज ने, उसमें ये कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे टीबी होगी तो वो हेमेटोजेनस स्प्रेड होती है। हेमेटोजेनस में क्या मतलब है, अगर उसको टीबी लिम्फेडिनाइटिस भी होगा तो उसके हो सकता है कि उसके वो जो जिस पॉइंट पे वो स्प्रेड हुई थी वो किडनी के अंदर भी चली गई हो और वो किडनी के अंदर भी उसको कंटेन के चक्कर में ग्रैनुलोमा बन गया हो। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट टीबी के लिए ट्रीटेड फॉर एनी काइंड ऑफ टीबी इन लास्ट 2 years और अब उसकी किडनी की बायोप्सी में या ब्लैडर की बायोप्सी में ग्रैनुलोमा आ रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टीबी व्हिच हैज बीन फॉर 2 years और करंटली इसमें कोई एक्टिवनेस नहीं है, क्योंकि ग्रैनुलोमा इज जस्ट एविडेंस ऑफ कि किसी न किसी पॉइंट पे टीबी हुई थी और इस पॉइंट पे वी कैन नॉट से एक्टिवनेस के लिए हम लोग करा लेते हैं कि यूरिन फॉर कल्चर का, लेकिन कल्चर की वो यील्ड इज नॉट ग्रेट, बहुत अच्छी यील्ड नहीं है और तो बहुत दफा केसेस में हमने ट्रीट नहीं भी किया। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं क्लिनिकली पे, ठीक है आप हमारी क्लिनिक पे 3-3 महीने पे यूरिन फॉर कल्चर ले लेते हैं, 3-3 महीने फॉलो करके हमने 1-1 साल तक फॉलो किया, तो 1 साल में उनके 12-12 किलो 15-15 किलो वेट गेन हो गया। तो हमने कहा अगर एक्टिव तो वेट तो स्टैटिक होता ना। तो ग्रैनुलोमा with treated TB we don't, but granuloma without no treatment of TB usually फिर हम लोग benefit of doubt दे के ट्रीट कर लेते हैं, बिकॉज ये जो कॉन्सिक्वेंस है जरूरी नहीं कि एक किडनी के अंदर हमें कुछ नहीं मिला तो ये नहीं है कहीं और नहीं होगा, तो फिर वो इट्स अ डिजीज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइब्रोसिस करेगी, स्कारिंग करेगी और फिर बाद में दूसरी किडनी भी खराब कर दे, तो बेटर वी ट्रीट इफ पेशेंट हैज ऑलरेडी नॉट ट्रीटेड। सारी ऐसा पूछ रहे एक पेपर पढ़ा था, लिम्फेटिक एंड सेक्सुअल ट्रांसमिशन का जिक्र भी है, तो सेक्सुअल का तो हम थोड़ा कम ही जिक्र करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं पढ़ा। अच्छा, ओकेजनल होगा कोई, ये एक इंडियन पेपर है, इसमें तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन का जिक्र भी है। टीबी के ट्रांसमिशन वेज में ना पल्मोनरी टीबी है, वी ऑल आर एक्सपोज्ड टू पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, किसी न किसी से एक्सपोज होकर हम सब इम्यून हो सकते हैं और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यूजुअली रिएक्टिवेशन ऑफ अ टीबी जो हम सब एक्सपोज हो चुके हैं, इट्स नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। ये तो पस के अंदर कहते हैं जब पस ड्रेनिंग पस होता है तो ड्रेनिंग पस के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो एफडीज होते हैं वो मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वो भी
डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट से टीबी नहीं कराएंगे, वो टीबी इनहेलेशन के थ्रू ही कराएंगे। अच्छा, सेक्सुअल वाला नहीं है कोई ऐसा? कोई ऐसी केस रिपोर्ट टाइप होगा, मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर दिस इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी वे ऑफ। अच्छा सुनील, एक दूसरा इंस्टेंस ये है कि व्हेन वी आर डूइंग ट्रांसप्लांट and especially in a population which is an immigrant population, particularly from Afghanistan, we have seen that these cases on a recipient side, when we make a bed for the kidney, the graft, there are a lot of lymph nodes, and in order to clear the vessels we have to take a lot of lymphatic channels with it. Suspicion बहुत strong होती है, and even to the extent that we are surprised with the volume of the bladder, which is very compromised. So the whole picture was actually set in like a tuberculosis somewhere happening, same patient maybe a year back or 2 years back. So in those instances, how can we send the sample of the tissue, that is the lymph node? We have, I think, मुझे याद है 3 patient diagnosed on the basis of के you have taken the lymph nodes and send it for histopathology from a transplant day, और उसमें जब केजिटिंग ग्रैनुलोमा आ गया था, then we started tuberculosis therapy in these kinds of patients. अच्छा, इन केसेस में ट्रांसप्लांट में यूजुअली हम लोग वी आर ट्रीटिंग ऑल आवर पेशेंट्स विद अ लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट एटलीस्ट। तो एटलीस्ट अगर उसमें लेटेंसी होगी तो वो तो कवर हो जाएगी, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग फॉर रीएक्टिवेशन के लिए, हम प्रिवेंट करने के लिए हम 6 months और 9 months के लिए आईएनएच सबको दे रहे होते हैं। Active tuberculosis at that time, so if you have a suspicion of at the time of bad, you can take a biopsy samples and send it for histopathology. Even histopathology showing caseating granuloma, even granuloma in the context of now we are going to immunosuppress this patient for, or heavy immunosuppression for first 3 months, we start ATT straight away. 3 cases तो मुझे याद है कि हमने lymph node on the डे ऑफ ट्रांसप्लांट में डायग्नोज हुआ, 2 दिन बाद हमने एटीटी स्टार्ट कर दी एंड दे डिड फाइन। प्रॉब्लम उसमें सस्पिशन नहीं भी था, बिकॉज वी प्री ट्रांसप्लांट वी ट्राई टू रूल आउट ट्यूबरकुलोसिस बाय डूइंग, ऑल्दो उसमें थोड़ा सा हम लोग वी डू रूल आउट ट्यूबरकुलोसिस जस्ट बाय डूइंग चेस्ट एक्सरे एंड हिस्ट्री बेसिस। आइडियली हम लोग सीटी स्कैन भी करा लेना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट फिर उसमें हमारे प्री ऑप में ये होता है कि यार कोई एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, एंड नाउ अगर है भी तो प्रॉब्ली वी स्टार्ट एटीटी। लेकिन सेंडिंग सैंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस टाइम पे, बिकॉज इसमें ही इफ फाइंडिंग ग्रैनुलोमा बहुत अच्छा, ज्यादा हाई सस्पिशन है, आप एक लिम्फ नोड उठा के आप नॉर्मल लाइन में भी डाल दें, लेबल कर दें फॉर टीबी कल्चर, दैट वुड बी ग्रेट कि हम लोग बाद में उसको देख सकेंगे फॉर सेंसिटिविटी ऑल्सो, बिकॉज सेंसिटिविटी इज बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसमें उन्होंने डिस्कस नहीं की, लेकिन यूजली क्योंकि आप लोग हमारी तरफ भेज देते हैं इसलिए देखते हैं, लेकिन आईएनएच रेजिस्टेंस इन पाकिस्तान इज 13% to 14%। दिस मीन्स जब हम एटीटी की ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो हम आईएनएच की रिजीम डब्ल्यूएचओ को तो आंखें कर ब्लाइंड फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें चांसेस होते हैं फेलियर के, और वी डू सी फेलियर्स कि जब हमारे पास अपफ्रंट कल्चर नहीं होगा तो सेंस ही नहीं आएगी। हम जीन एक्सपर्ट पे डायग्नोज तो कर लेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी पे भी डायग्नोज कर लेंगे, लेकिन मैनेजमेंट इश्यूज आएंगे जब हमारे पास सेंस ही नहीं होती, एंड सेंस ही इन दिस एरा ऑफ ड्रग्स रेजिस्टेंस इज गेटिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। सॉरी, जो ओटी से सैंपल्स आते हैं, स्पेशली इफ यू आर हैविंग सस्पिशन ऑफ टीबी, सो हमें सैंपलिंग किस तरह करनी चाहिए? क्योंकि रूटीनली हम फॉर्मलिन में भेज देते हैं, क्या उससे डिफरेंट उसका सिक्रीशंस एंड वो पस वगैरह और ज्यादा भेजें, और उसमें नॉर्मल कि वही बात डॉक्टर मुबारक वाली बात में, फिर वी कैन नॉट जस्टिफाई कि अगर सिर्फ 2 to 3% ऑफ किडनी बायोप्सीज, किडनी हिस्टोपैथोलॉजीज आर टीबी, दिस मींस 98% में तो कुछ और कॉज है, तो फिर जहां 98 का भी कल्चर जा रहा होगा तो बहुत खामा में कोई फायदा भी नहीं होगा, तो उसमें ऐसे केसेस में हम कर लेंगे। हाँ, इफ यू आर डूइंग अ ब्लैडर बायोप्सी और विद अ हाई सस्पिशन, जैसे अब्बास ने कहा कि उसका वो लग रहा है कि यार ब्लैडर टीबी वाला है, उसमें आप लोग करते भी हैं कि पहले यूरिन फॉर एवी जीन एक्सपर्ट्स करके रूल आउट करने खोलते हैं, उसका सैंपल सेंडिंग इन नॉर्मल लाइन फॉर टीबी कल्चर इज इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद फॉर्मलिन हिस्टोपैथोलॉजी। Imaging, in which we perform X-ray, IVP, CT, urogram, ultrasound, and RPG and APG, plain X-rays. Calcification in more than 50% of the patient seen in patient of genitourinary TB. Initial renal lesions, faint, punctate calcification in parenchyma, end-stage renal TB, small shrunken kidneys, calcified cement or
putty kidneys as seen in this picture. Such kidney should be removed or not? जैसे ये बता रहे हैं। जो पीछे टाइप्स बताई थी उसके हिसाब से तो प्रॉब्ली इसकी ऑटो नेफ्रेक्टमी तो वैसी हो चुकी होगी। उन्होंने कहा था कैल्सीफाइड के ग्रैनुलोमा बनते ही इतनी देर से है कि उस वक्त तक वो ग्रैनुलार पूरे लॉस हो चुके होंगे, तो इसको निकालना चाहिए। निकाल देना चाहिए। तो उसमें बेनिफिट होगा कि वी विल if patient has not treated for tuberculosis, we don't know कि टीबी के उसके साथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अपने आप को सिर्फ किडनी तक कंटेन रखा था या यूरेटर के साथ था या फिर ब्लैडर में भी जा चुका था, तो ये अनट्रीटेड विल क्रिएट मोर कॉन्सिक्वेंसेज लेटर ऑन। तो निकालने से बेनिफिट होगा अगर आपका इसमें ग्रैनुलोमा आ जाएंगे आप उसको क्रिएटिंग, लेकिन हमारे केसेस में तो कैल्सिफिकेशन के और बहुत सारे दूसरे कॉजेस भी होते हैं ना, ये जो स्टोन होते हैं वो भी तो कैल्सिफाइड। अच्छा, अगर ये किडनी हम छोड़ देते हैं तो लॉन्ग टर्म में रिसर्जेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस होते हैं। रिसर्जेंस भी होगी, वही टीबी प्रॉब्ली अनट्रीटेड रह जाएगी अगर वो नीचे भी इन्वॉल्व होगी तो। जगह उसने यूरेटर में भी एक्टिव ट्यूबरकुलोस बैसिला, इससे रिसर्जेंस नहीं होगी क्योंकि जाले इसमें तो अल्टीमेटली क्या होगा, ट्यूबरकुलोस बैसिला को वो नहीं मिलेगा और वो प्रॉब्ली डाई आउट ही हो जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो आगे प्रोसीड करेगा, लेकिन आगे मौजूद तो, क्योंकि जब यहाँ मौजूद है तो कॉन्सिक्वेंसेज है कि कहीं भी टीबी हो सकती है ना। असल में जो एक्स्ट्रा परमानेंट ट्यूबरकुलोसिस का जो है ये कि वो हेमेटोजेनस स्प्रेड से हुई थी, पूरे जिस्म में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जरासीम घूमे थे और वो हर जगह जाके सीड हो गए। अब फिर वो लोकल इम्यूनिटी जब डाउन होती है उस एरिया पे, दैट्स व्हाई सम पेशेंट हैव टीबी, लिम्फेडिनाइटिस, सम हैविंग यूटीबी। जाले टीबी तो पूरे जिस्म में घूमी थी, लेकिन उस जगह पे जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस पुअर होते हैं तो फिर वहां पे वो रिएक्टिवेशन अपने सिम्टम्स शो कर देता है बाय हैविंग इनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स। किसी को किडनी में आ जाती है, किसी को बोन एंड जॉइंट में, लेकिन टीबी तो पूरे जिस्म में गई थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी जगह डायरेक्ट इनॉकुलेशन तो नहीं हुई थी, इट्स थ्रू हेमेटोजेनस स्प्रेड। तो प्रॉब्ली उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए और एटीटी दे देनी। हमने 2 इयर्स का आर्बिट्री सा कट ऑफ रखा है कि ट्यूबरकुलोसिस 2 इयर्स में ट्रीट नहीं होगी, लास्ट 2 इयर्स में तो हम लोग दे देते हैं एडीटी। My question: what is the risk of TB in contralateral kidney? And have you seen simultaneous both kidney involved by TB? Yes. यूजली जो मैंने आई हैव सीन यहाँ GUTV पर्टिकुलरली रीनल ट्यूबरकुलोसिस इज थ्रू हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी जब फॉर सम रीजन नेफ्रेक्टमी की गई और वो नेफ्रेक्टमी की बायोप्सीज में आ गया, हमारा जो नेफ्रोलॉजी साइड है वो इतनी ज्यादा बायोप्सीज कर रहा होता है फॉर AKIs, एंड उसमें भी मुश्किल से एक केस याद होगा जो हमने ग्रेनुलोमा का देखा होगा। तो प्रॉब्ली वी डोंट नो कि ट्यूबरकुलोसिस जब एक किडनी में थी तो दूसरी किडनी में है या नहीं है, बिकॉज के वजह इसका मैकेनिज्म इज नॉट डायरेक्ट इनॉकुलेशन इनटू किडनी, इट्स थ्रू हेमेटोजेनस स्प्रेड। पूरे जिस्म में ब्लड में सर्कुलेट हुआ था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जरासीम जब उसको पहली बार एक्सपोज हुआ था, और फिर बॉडी ने अल्टीमेटली मैक्रोफेजेस को इवेट करके वहां पे ट्यूबरकुलोस बैसिलाई को कंटेन कर दिया है, खत्म नहीं किया था, कंटेन किया था। फिर वो जब इम्यूनिटी डाउन होती है तो रिएक्टिवेशन हो जाती है। तो दूसरी वाली किडनी में वी डोंट नो कि उस किडनी में भी है या नहीं है, और इवन डूइंग अ बायोप्सी, क्योंकि इसमें कोई इस जगह आप टेस्ट की सेंसिटिविटीज देखें तो बहुत अच्छी है नहीं, एक्सेप्ट हिस्टोपैथोलॉजी। अब हिस्टोपैथोलॉजी भी अगर निडल बायोप्सी करेंगे तो निडल में तो हिट एंड मिस का चांस होता है। दैट्स व्हाट वी यूजुअली सी विद ट्यूमर्स वगैरह के भाई उसमें हिट एंड मिस है, उसके बराबर में आपने पिक किया तो उस जगह वो लीजन नहीं भी है तो डजंट रूल आउट ट्यूबरकुलोसिस। तो ऐसे केसेस में इफ यू फाइंड एविडेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस फ्रॉम वन साइड, पेशेंट हैज नॉट बीन ट्रीटेड, आई थिंक इन कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे बहुत ज्यादा टीबी एंडेमिक है, बल्कि हाइपर एंडेमिक है, वी शुड ट्रीट फॉर दैट ट्यूबरकुलोसिस। All patients being evaluated for genitourinary tuberculosis should also have a chest X-ray to exclude concomitant pulmonary infection. Intravenous urography, gold standard imaging for early renal tuberculosis. Initial erosive changes of urothelium appear as loss of sharpness and edge, irregularities, calcium erosion, which is seen as moth-eaten appearance on IVP. Filling defects may be seen caused by tuberculomas rupturing into the calyx or by papillary necrosis. Can demonstrate medullary cavities that communicate with collecting system as shown in diagram.
When a calyx or infundibulum is stenosed, contrast excretion by renal parenchyma may fail, creating a phantom calyx, which is also known as amputated calyx. The most common findings on IVP, however, are obstructive changes resulting from scarring and distortion of the collecting system, calcial obliteration, infundibular narrowing, hydrocalycosis, segmental or total hydronephrosis, and hydroureter may occur. इसमें जब आप लोग जो सीनियर्स हैं इसमें आप लोग का क्या है कि ये जो IVU है हमारे लिए क्या दिस इज नॉट गिव अ माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस जस्ट रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस व्हिच एक्चुअली कैन सजेस्टिव ऑफ टीबी लेकिन बहुत सारी ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस इसमें बहुत सारी ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस नहीं हो सकती कि स्कारिंग हो गई डिस्टॉर्शन ऑफ कलेक्टिंग सिस्टम हुआ या जैसे उन्होंने पिछली वाली बुकिश पिक्चर तो वो कहा जाता है कि ऐसा है लेकिन ये फैंटम कलेक्स वगैरह लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस तो बहुत सारी होती होंगी एंड पर्टिकुलरली लिविंग इन ऑब्स्ट्रक्टिव बेल्ट उनसे भी सिमुलेट कर सकते हैं Whenever there is a filling defect and we can suspect for more than TB, for example, stone, for example, tumor, and we used to go for cultures, urine smear, gene expert, and cultures, and but the sensitivity is not good. So how to then proceed? Sometimes we treat symptoms only, weight loss and fever, and so these are findings in IVU, and but further confirmation is also required. Actually, the funny thing about genitourinary tuberculosis is, if you happen to read the textbooks in the 1990s, nobody was actually thinking in terms of having GUTB. Most of the people, they were not addressing this problem. This subject was not in the textbook, and somebody was maybe right in saying that I haven't seen it throughout my life. So that was the kind of a notion at the back of the mind of urologists. For the very first time, it was in the textbook of urology, and the chapter was written by our own people, Adib Saab and Anwar Saab, jointly in Hugh Whitfield's textbook of urology. And that was the first chapter of GUTB in any textbook, exclusive chapter. At that time, whenever, and I still remember in 1995, there was a conference, national conference, and one of our colleagues, he presented a paper and 20 cases of GUTB, which were proven not only by histopathology, but also by other tests. Everybody was thinking that this was something which is not on. Even the panelists were actually divided. They said that this is something which we haven't seen for the past 25, 30 years of our practice. So how come a junior person of maybe 30 years of age come up with 20 cases of GUTB? And that was Heather, Dr. Heather, who is in GI these days. So this was the dissertation of Dr. Heather in CPSP. And it was refuted to the very highest extent that you are actually telling us wrong. This is not the case. And all those people who are against this kind of notion, they think that this is something else. This is not TB. You are actually wrongly diagnosing it. So that was the kind of backdrop against which the whole scene is changed in maybe 25 years fast forward. Now we have got a lot of things, and even the radiological textbooks, they are addressing the problem. In the same 2001 or 2002, it was a joint declaration, maybe not a declaration, but a joint group from India and Pakistan who wanted to prepare a paper about GUTB, because this is a kind of an entity that has to be addressed in pathological conferences. So this was the kind of background. Nobody was actually believing in it. Since we have got cases like walled off TB, a kidney which is like a calcified kidney. So somebody was thinking that it's a calcified kidney, not a kidney which is having infection in it and it is walling off by maybe a metastatic calcification. So a different kind of a journey for GUTB.
आपको थोड़ा सा रफली ये हम लोग एक सीकेडी का पेपर कर रहे हैं अभी, क्रॉनिक किडनी डिजीज का। उसमें मेरे पास ये टेबल अभी कल ही जही ने हम लोग बनाया था, तो मैं जस्ट आपको जीयूटीबी के 33 केसेस थे इसमें, जिसमें से जस्ट 5 का सीवियर पॉजिटिव था आउट ऑफ 30, दैट मेक्स 15% ऑन सीवियर। जीन एक्सपर्ट 7 का पॉजिटिव था, दैट मेक्स थोड़ी सी चले बेटर यील्ड हो जाएगी। कल्चर वाज ओनली ग्रो इन 2 आउट ऑफ 33, यूरिन सबका भेजा था हमने, लेकिन 2 में कल्चर ग्रो हुआ। हिस्टोपैथोलॉजी 33 में से 26 पेशेंट्स वर डायग्नोज ऑन हिस्टोपैथोलॉजी, और उसमें से जो है ना वो 24 जो है वो केजिएशन था और 26 में गिरा हुआ, तो प्रॉब्ली 2 पेशेंट थे जो बगैर केजिएशन के गिरने वाले। तो प्रॉब्ली स्टिल अवर बेस ऑफ डायग्नोसिस इज ऑन दीज एक्चुअली। ये तो क्योंकि ये आईडी लिख रहा है तो इसने कोई भी यूरोलॉजी वाली बात नहीं लिखी, कोई रेडियोलॉजी इमेजिंग नहीं लिखी। उसने कहा कि बेसिस स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, या तो आप कल्चर पे डायग्नोस करेंगे, या जीन एक्सपर्ट पे करेंगे, या फिर आप हिस्टोपैथोलॉजी पे करेंगे। तो स्टिल अवर, जैसे सर ने कहा ना कि जब हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें बातें तो ये वाली लिखी होंगी, लेकिन इसके पीछे बेस भी होगी। अनदर प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास से अब हम ये सीकेडी का इतना बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, हम पेपर लिख रहे हैं सीकेडी फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान, जहाँ बहुत बड़ा बर्डन है। हार्डली पेशेंट्स का डाटा कितने का मिला है, 20 का। मतलब ये एक्सपेक्ट के, फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल SIVT में मेरा ख्याल है नहीं, जब से मैं देख रहा हूँ हमने तकरीबन 400 के करीब तो GUTB के देखे होंगे पेशेंट्स, जिनको हमने मैनेजमेंट स्टार्ट की है। बहुत सारों को तो हमसे फॉलोअप पे रखा हुआ है, लेकिन हमारी तरफ से कोई बहुत जबरदस्त किस्म का पेपर नहीं है जिसमें सिर्फ डायग्नोस्टिक ना हो फ्रॉम यूरोलॉजी परस्पेक्टिव, फ्रॉम कि उसकी बेसिस कितनी स्ट्रांग थी। भाई देखिए किसी का कल्चर प्रूवन है तो बहुत स्ट्रांग है, आप फिर उसकी आप डायग्नोस्टिक भी डिस्कस कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट के इतने इश्यूज आप लोग डिस्कस जो डील कर रहे होते हैं, जो आगे इसने बताया वो बहुत बड़े, लेकिन उसके बारे में लिटरेचर जब आप सर्च करने बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। CT scan, more sensitive in detecting the calcifications and thickening of the collecting ducts, is particularly useful in evaluation of the patients with complicated and extensive tuberculosis. Perinephric and source abscesses can better be utilized in CT scan. Retrograde pylography and antegrade pylography. It's used when both IVP and CT can't be done because of renal insufficiency or contrast allergy. They are helpful in delineating and distortion of genitourinary anatomy, and also used in conjunction with IVU to determine whether cavitations are obstructed or non-obstructed, whether they are in communication with the unique acting system or not. Ultrasound may also be used, but it has limited role in diagnosis of genitourinary tuberculosis. It is useful in pediatric population and pregnant females. Also to follow the hydronephrosis in the patient receiving medical treatment because of fibrosis during the healing can be worsen urinary obstruction. MRI also be used, but is also used in pregnant female and pediatric population. It also better visualization of urothelium thinning and irregularities. Treatment. Genitourinary tuberculosis can be successfully treated with standard short course regime of 6 months of first-line anti-tuberculosis drugs. Treatment begins with intensive phase of 2 months of daily INH, rifampicin and pyrazinamide, which targets rapidly multiplying bacteria, followed by a continuation phase of 4 months of INH and rifampicin, which given daily or alternately thrice weekly, which attempts to eradicate slow, sporadic multipliers and persistent bacteria. पाकिस्तान में हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वो कहते हैं कि आपको अल्टरनेटिव रिजीम, मतलब अल्टरनेटिव नहीं देनी चाहिए, इट शुड बी डेली। ATT शुड बी, जैसे हम टेक्स्ट बुक से किसी से निकाल के लाएंगे और लिखा होता है कि आप थ्राइस वीकली दे सकते, लेकिन फॉर डेवलप्ड कंट्रीज वो कहते हैं कि नहीं, दिस इज अ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस, क्योंकि वो जगह बेसिला को आप थोड़ा एक्सपोजर देके फिर हटा देंगे और ओवरऑल आपका बहुत ज्यादा है, तो आप ये रिस्क डेली 18 daily dose for 6 months, 2 months for HRZE जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और फिर उसके बाद 4 months of HLR। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि अगर H रेजिस्टेंट टीबी हमें नहीं पता होगा, जो अगर हम कह रहे हैं कि 13% है पाकिस्तान में, तो अगर हमसे उसको HR पे डाल देंगे तो वहाँ मोनोथेरेपी R हो जाएगी, फिर R भी फेल कर देगी।
this is actually we need more robust data coming from Pakistan to make our own guideline changes. इस वक्त तक तो यही है HR हम लोग जिसमें सस्पिशन हाई होता है वेट गेन नहीं हो रहा होता और प्रॉब्लम तो व्हाट वी डू वी HRZE followed by HRE E to compensate for H अगर वो रजिस्टर्ड तो हम लोग 2 months पे यूजुअली रिव्यू करते हैं यार वेट गेन नहीं हो रहा इतना अच्छा नहीं गेन हो या फिर 15 में हमारा चेस्ट एक्स इसमें क्योंकि कंपैरिजन में हमारा कुछ नहीं होता एक्स्ट्रा कम्युनिटी ट्यूबरक्लोसिस में बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं हो सकता आप कंपेयर करके एक्सेप्ट लिम्फ नोड्स को देख रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा आगे पीछे होते हैं तो वी यूजुअली मॉनिटर वेट ये वेट गेन नहीं हो रहा और पेशेंट की सिम्टम्स परसिस्ट है तो फिर हम लोग बढ़ा देते हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम GTB में बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें कोई ऐसा हमारे पास मार्कर और इंप्रूवमेंट चेक करने के लिए एक्सेप्ट वेट कोई डिस्यूरिया वगैरह तो परसिस्ट ही करता है ये जो रीनल एक्सिस का दर्द होता है उसमें भी 6 मंथ है में फिर आप टाइम बढ़ा देते हैं तो रीनल ट्यूबरक्लोसिस सॉफ्ट एक्सिस के साथ अगर सॉस में अगर किडनी पे आया तो 6 मंथ्स गुड है लेकिन उसके अंदर आप एक्सिस को आप मॉनिटर कर सकते हैं सही इसके अंदर हम 6 महीने में सीटी स्कैन करा के देख लेते हैं लेकिन बहुत दफा हमारा जो सॉफ्ट एक्सिस है हमने देखा है इट्स यूजुअली हैव अ कम्युनिकेशन विद वर्टिब्रेट जो वर्टिब्रल बोन डिजीज है तो फिर तो इज 9 to 12 months 9 to 12 और स्पाइन जब होता है तो 9 to 12 months यूजुअली 12 भी डेज होते हैं और फिर हमारा ये जरूर कराते हैं कि वो जो सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट था वो डिसअपीयर हुआ या नहीं हुआ सही Second line agents are reserved for patients who experience side effects from first line agents who have whose Mycobacterium tuberculosis organism exists drug resistant or in whom first line agents failed. These are the second line drugs with are mostly injectable: streptomycin, capreomycin, amikacin, cycloserine, ethonamide, levofloxacin, moxifloxacin, para-aminocyclic acid, linezolid, and bedaquiline. Surgical therapy. About 55% of the patient with genitourinary tuberculosis require surgical management during their course of disease. Intervention is more frequent as disease advances, which are performed to relieve the urinary obstruction, to drain infected material, to remove non-working infected kidney in cases in which resisting tuberculosis, to improve the medically resistant hypertension secondary to functionally excluded kidney, to reconstruct the urinary tract. Procedures will require to relieve the obstruction in emergency cases such as cases of uremia or sepsis by PCN or DJ stenting. Nephrectomy is performed in 27% of genitourinary tract tuberculosis patients. Is considered two settings. First, in the patients with non-functional kidney with recurrent tuberculosis despite of optimal medical therapy. After nephrectomy of infected kidney, relapse rate of less than 1% reported after short course of medical treatment. The second setting in which nephrectomy is considered is in the patients with a non-functional kidney and medically resistant hypertension. Improve hypertension after nephrectomy in 65% of cases. Ureteric tuberculosis. Thank you, Dr. Fayaz. It's more than 9. We will conclude our session today. Thank you, Dr. Sunil, for coming here. Regarding GUTB, it's disease of our part of world, and we need data and evidence from us to have established a good management and investigations and these sort of recommendations regarding GUTB. Thank you, everyone, for coming. Thank you.